हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 67। इसमें हमें शॉर्ट हैंड का एक पैसेज दिया है जिसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। मैं इसको आराम से रीड करूंगी सो दैट आप भी मेरे साथ साथ इसको रीड कर पाएं और अच्छे से आउटलाइंस को समझ पाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डियर सर, आई एम सरप्राइज्ड to hear of Mr. Hugh Hammer's opposition to the highly reasonable views taken by Professor Hawkins on the syllabus in history. Full stop. Professor Hawkins, I believe, does his best in the circumstances to help his pupils and to adhere to the scheme of history lessons which deals with the extension of commerce and with all forms of man's activity. Full stop. He is heedful of every circumstance which may affect the coherence of history and the historic belief expressed in the phrase commerce follows the flag. Full stop. There can be no misapprehension of his meaning, and none but a blackhead would be likely to misapprehend him. Full stop. He shows how the upheaval of war, though harmful to humanity in other ways, may help a nation's commerce. Full stop. I humbly hope Mr. Hammer may behave reasonably and cease to harass Professor Hawkins in his historical course. Full stop. Yours truly. Stop. ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।